Good morning to all of you. So in last class we were discussing partition of Bengal issue, right? So we are going to continue the same topic, partition of Bengal, right? Partition of Bengal. The date that you should know is 16 October. 16 October 1905. Clear? Partition of Bengal. Now, I have already discussed that this was the decision of Curzon, right? What was the original intention or original motive behind this decision? We have already discussed in the last class. The original motive was to curb the growth of nationalism in Bengal, right? To break the Hindu Muslim unity. But what is the declared agenda? Why the government is doing this? The government said that in order to bring administrative efficiency or efficacy, we are doing this. But the purpose is somewhat else. We have already discussed. So when this decision, okay, was taken and this decision was made effective, the people of Bengal came forward. They started opposing this decision, and even Hindus and Muslims both came together and opposed the decision of partition of Bengal. They came together and opposed the decision of partition of Bengal. And in this way, we see a movement also started, and this was the first mass movement in India. And the name of this movement was Anti-Partition of Bengal Movement. This we have already discussed. And in this movement, the two core strategies are: one core strategy is promotion of Swadeshi, and the second core strategy was promotion of boycott. Clear? This is the most important strategy, promotion of Swadeshi. It was implemented, okay, completely. But what about promotion of boycott? Not completely, because here boycott means limited boycott. Here boycott means what? Limited boycott. It was not full scale boycott, and limited boycott means boycott of foreign clothes, foreign goods, right? And liquor, etc. Right? But what about the passive resistance? Passive resistance is also a kind of boycott. I have already discussed with you in last class that passive resistance is also a kind of boycott, right? For example, in passive resistance, which strategies will come? Boycott of law courts, okay, legislatures, you can say schools and colleges. These all are boycott, full scale boycott. Now, since this movement got the official support of Indian National Congress, yes. This movement was supported by moderates and extremists both, yes. Now, in practical sense, full scale full scale boycott was applied in Bengal. Practical sense, the people were doing this in Bengal because they were not happy with the British rule. So they were doing boycott. Boycott करने से आप किसी को रोक भी नहीं सकते थे. मेरी बात समझ गए ना? अगर आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो तो you are free to do this. No one can stop you from doing this. So people were using boycott, but it was not official program of the Swadeshi movement. Got it? So what extremists said? What is extremists demand during the Swadeshi movement? That this passive resistance should be officially accepted as a strategy of the movement from the platform of Indian National Congress. But the extremists, but the moderates were not ready for that. Moderates were not ready for official acceptance of passive resistance, especially boycott of law courts, schools, colleges, etc. Moderates were not ready. Clear? But the extremists were demanding this. So this is one reason between the deadlock between moderates and extremists. Okay. Now the second important point is that Swadeshi movement, basically anti-partition of Bengal movement, is launched in context of Bengal region, right? But its reflections were seen in other parts of India also. Now, what was happening? Extremists were demanding that extension of Swadeshi movement should be done outside
Bengal also. And this should be officially declared by Indian Nation Congress. But INC was not ready to do this. Basically, moderates were dominating, moderates were not ready to do this. So this is the second reason for deadlock between moderates and extremists. तो पहला तो हो गया passive resistance official acceptance, and second is extension of Swadeshi movement outside Bengal official acceptance. तो ये दो problems थी. Got it? So if someone asks you Swadeshi movement was extended outside Bengal or not, so the answer is yes, but it was popular feature, not officially supported by INC. Reflections were seen in other parts of India also. Got it? Passive resistance was used or not? Yes, this strategy was used, but this was not official program of Indian National Congress. और कल की क्लास में जो इवनिंग में मैंने सेशन ली थी, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना, मैंने कैपिटलिस्ट्स के साथ जोड़ के नेशनल मूवमेंट को बताया है. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैपिटलिस्ट क्लास, इंडिजिनस कैपिटलिस्ट क्लास, was also not supporting the idea of full boycott. कल की वीडियो को जरूर देखना, बहुत सारा उसमें नया अप्रोच आपको मिलेगा कि कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया वो अभी कंसोलिडेशन नहीं था, बट स्टिल दे वर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ फुल स्केल बायकॉट. इस तरह की पॉलिसी को वो सुसाइडल मानते थे. दे हैव द कनेक्शंस, उनके पास कनेक्शंस थे. आईएनसी लीडर्स दे वर वेल कनेक्टेड, बट स्टिल दे वर नॉट डूइंग दिस. और कल एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि if you will launch Swadeshi movement outside Bengal officially, so there are greater chances that the British government will suppress it, and that's why the moderates were not in the favor of extension of Swadeshi movement outside Bengal region. ये बात आप समझ गए? ये two issues of deadlock clear है. ये prelims में पूछा जा सकता है, and this is a very important concept. Now we are entering into some other parts. Now, what are the programs that were followed during the Swadeshi movement? I hope you all are familiar with this. What are the programs that were followed during Swadeshi movement? कौन से programs होंगे? So I told you earlier that extremists believe in the capacity of the masses. So mass mobilization will be done. Mass mobilization will be done. Okay, and for this mass mobilization, some Hindu festivals will also be used, right? Like Ganpati festival, Shivaji festival, right? Mass mobilization technique will be used, and for this mass mobilization, some Hindu festivals will also be used, like Ganpati festival, right? Shivaji festival. ये festivals भी use किए जाएंगे mass mobilization के लिए. Clear? Various volunteer corps will be formed. ठीक है? Various volunteer corps will be formed. Volunteer corps means the people like us. Okay? They will do what? They will make various committees. They will contact the people, the masses, and regarding this, they will try to promote the political awareness among the masses. वो लोगों में political awareness को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और extremists will do what? Extremists will promote what? Their ideas. And what is their ideas? Extremists will promote their ideas of 3S here. And we all know that what is the meaning of 3S. क्या है 3S का meaning? बताओ. Okay. Self-reliance, self-sacrifice, strong will. ठीक है? So the masses will be prepared for this. The masses will be prepared for self-reliance. Okay, they will be prepared for self-sacrifice. And for this you need what? A strong will. It means a kind of, you can say that nationalist sentiments are being promoted in the minds of the people, and they are being taught that if you will use Swadeshi, so what will be promoted? अगर आप स्वदेशी को यूज करोगे तो what will be promoted? Self-reliance will be promoted. If you will use indigenous goods, this will be a great help for your nation. अगर आपको बहुत ज्यादा देशभक्ति दिखाने की इच्छा हो रही है तो बस आप इंडिजिनस गुड्स का इस्तेमाल कर लो, ये भी एक बहुत बड़ा देशभक्ति होगा, राइट? दिस विल बी अ ग्रेट help and contribution for the nation, and in this way we will be able to develop what?
Atma Shakti and Atma Nirbharta. And this is very important. Okay. If we want to achieve political freedom, so before this, economic freedom is must. And if we want to achieve economic freedom, before this, social freedom is must. So socio-religious reform movements in India, which started in 19th century, first half of 19th century, they were aiming to promote what? Social freedom. Got it? Swadeshi movement is trying to promote what? Economic freedom. And when we will be able to promote the idea of social freedom and economic freedom, then finally we will be able to achieve political freedom. So, what is the most important thing? Okay, before political freedom, what is the most important thing? Economic freedom, social freedom. That is the most important thing, right? So, we need to, okay, very good. Political freedom is meaningless without self sufficiency. कल की क्लास में डिस्कस किया था. दिस इज द आइडिया ऑफ जमशेदजी टाटा. बहुत पहले 1880s में जमशेदजी टाटा ने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज मीनिंगलेस विदाउट द सेल्फ सफिशिएंसी, एंड दैट्स व्हाई industries are needed, scientific and technological educations are needed. It means if you want to promote self reliance, what you will have to do? You will have to promote indigenous industries. आपको क्या करना होगा? इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना होगा, देशी उद्योगों को प्रमोट करना होगा, राइट? यू विल हैव टू प्रमोट इंडिजिनस इंटरप्राइजेस. आपको इंडिजिनस इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना होगा. एंड फॉर दिस हु विल हैव टू कम फॉरवर्ड? आगे किसको आना होगा? कैपिटलिस्ट क्लास, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है, दे विल हैव टू कम फॉरवर्ड. सो फॉर दिस पर्पस इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास will have to come forward. इनको आना पड़ेगा. And before this Swadeshi movement, Indian capitalist class was not consolidated. It was not organized. So during this movement, do you think that they will realize the need to be organized? Yes. 1905 के पहले, before Swadeshi movement, write this point, before Swadeshi movement, the Indian capitalist class was not consolidated or it was not organized. Before Swadeshi movement, Indian capitalist class was not consolidated and it was not organized, right? It was not consolidated and it was not organized. It was not consolidated, it was not organized. So write next point, that at this time, the capitalist class also realized, at this time, the capitalist class also realized the need to be organized. Capitalist class also realized the need to be or to get organized. The need to get organized. Okay, and right, as a result, in 1907, as a result, in 1907, IMC was set up. Indian Merchants, okay, Chamber was set up, right? IMC was set up. IMC was set up in 1907. हाँ, in Bombay, it was set up. अब ध्यान से समझना इस बात को. In this movement, what is being promoted? स्वदेशी. स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने के लिए क्या होना चाहिए? स्वदेशी इंडस्ट्रीज. स्वदेशी इंडस्ट्रीज को कौन प्रमोट करेगा? इंडियन कैपिटलिस्ट. तो क्या इस मूवमेंट से इंडियन कैपिटलिस्ट को बेनिफिट होने वाला है? यस और नो? यस. कल वाली वीडियो आप लोग जरूर देखना, तो चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. तो हाँ, इस मूवमेंट से इंडियन कैपिटलिस्ट को बेनिफिट होने वाला है, राइट? सो इंडियन कैपिटलिस्ट, देखो, बिजनेसमैन क्लास खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं करेगा, बट this movement is going to provide benefits to the business class, so they will provide funds. But
there is one problem. And what is the problem? The Indian business class was working in association with British merchants and traders, because company came to trade in India in 1600. सोचो 1600 से अगर कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है, दिस इज व्हाट 1905. More than 300 years of British presence in India, and British were mainly traders. Indian merchants were, अब देखो अगर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग क्लास था होगा, तो अब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन ना, तो आप थोड़ी ना देखते हो कि ये प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, आप सेल करते हो उसको. मेरी बात समझ गए ना, आज भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, आप उसको जिसमें ज्यादा आपको मुनाफा होता है आपको काम करते हो. तो इंडियन बिजनेस क्लास वाज वर्किंग इन एसोसिएशन विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है, उनके साथ मिलके काम कर रहे थे. नाउ सडनली इफ इन ऑल ओवर द इंडिया फॉरेन क्लॉथ्स विल बी बायकॉटेड, तो उस ट्रेड नेटवर्क में तो इंडियन कैपिटलिस्ट का भी तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. ध्यान से समझना, अचानक से ऑल इंडिया अगर फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट शुरू हो जाएगा, तो नुकसान केवल ब्रिटिश मर्चेंट्स को नहीं होगा, इंडियन मर्चेंट्स को भी होगा. मेरी बात समझ गया ना. नुकसान, जो फिर कोका कोला का मान लो विरोध करना आपने शुरू कर दिया, और आपकी एक छोटी सी दुकान है जिसमें आप खुद ही कोका कोला बेचते हो, लोगों ने आके कोका कोला की बॉटल्स तोड़ दी, तो नुकसान तो आपका भी हो गया ना. कोका कोला कंपनी किसी और की है. मैगी पे पता चले कि लोगों ने मैगी का विरोध करना शुरू कर दिया, आपकी एक छोटी सी दुकान है, आप खुद भी मैगी बेचते हो, आपका मैगी भी बर्बाद हो गया, किसी ने खरीदा ही नहीं. ध्यान से समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं. तो इफ सडनली यू विल टेक एक्शन ऑल ओवर इंडिया, यू विल स्टार्ट बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स, so this will, okay, have an adverse impact on Indian capitalists also. That's why Dadabhai Naoroji does not support the ideas like this. Dadabhai Naoroji कहते हैं this is nonsense. Why are you burning foreign cloths? If you want to promote Swadeshi, that's good, but for this burning cloths, foreign cloths, okay, is not justified. आपको जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये आइडिया दादाभाई नौरोजी का था. इंडियन कैपिटलिस्ट का क्या आइडिया होगा? द सेम, बिकॉज दे नीड सम टाइम टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, उनको थोड़ा समय चाहिए. तो 1905 के स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन कैपिटलिस्ट के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी, पूरी तरह से सपोर्ट करें कि नहीं करें. मेरी बात समझ गया ना. तो दे विल ट्राई टू मेक एन इक्वल डिस्टेंस, येट दे विल प्रोवाइड फंड्स एंड ऑल दिस, बट they will try to make a distance, okay, but फिर भी they supported, this happened. So this is what Swadeshi movement, this is being promoted, okay. Now in the same part what will happen, Hindus and Muslims both have come together, दोनों साथ साथ आ गए हैं. In the processions both these religious communities are together. जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है उसमें हिंदूज और मुस्लिम साथ साथ हैं. और बंगाल के पार्टीशन का डिसीजन ही क्यों लिया गया था? हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए. अंग्रेजों ने सोचा यार अपना ट्रिक तो काम किया नहीं, राइट, सो दे विल ट्राई टू यूज अनदर ट्रिक. इट मींस ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट द पीरियड इज व्हाट 1905 to 1907-08, ओके. हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिख रही है. सो व्हाट ब्रिटिश विल डू, British will support in the formation of मुस्लिम लीग. जानबूझ के मुस्लिम लीग बनवा लेंगे. देखो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी आप समझ रहे हो, पैरेलली सबको मिला के समझना है. 1906 what we see, formation of AIML, All India Muslim League, and this party was a particular class party. This party was a particular class party. It was an exclusive party of Muslims, and it was committed to protect minority rights in India. इसका मोटिव क्या था? माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया को प्रमोट करना. सो दिस इज व्हाट मुस्लिम लीग, इट वाज कमिटेड टू प्रमोट माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया. What happened here? Okay, so write this point that British government helped and supported, British government provided help and support in the formation of Muslim League in India. Muslim government provided, British government provided help and support in the formation of Muslim League in India. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ.
ये पार्टी एस्टैब्लिश कहाँ की गई? एट विच प्लेस? द आंसर इज ढाका। ढाका, ध्यान से समझना है। इंडियन मर्चेंट चैम्बर कहाँ बना था? बॉम्बे में। और ये पार्टी कहाँ बन रही है? ढाका। ओके, ढाका में बन रही है मुस्लिम पार्टी। ओके, नाउ द पॉइंट इज, ओके राइट, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो है, राइट दिस, लॉर्ड मिंटो वाज द वायसराय। British government supported in this process. Lord Minto was the viceroy. British government supported in this process. Okay. Lord Minto was the viceroy. British government supported in this process. British government ने इसमें क्या किया? Support किया। ठीक है, राइट। फाउंडर्स, फाउंडर्स का नाम भी लिख लो यहीं पे, फाउंडर्स। ओके, नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, राइट। सेकेंड पॉइंट, ओके, वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क, ओके, सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली, वकार उल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद अमीर अली, राइट। ओके, खान, खान बहादुर गुलाम, खान बहादुर गुलाम, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफा चौधरी, मुस्तफा चौधरी, मुस्तफा चौधरी, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफा चौधरी, ओके, मुस्तफा चौधरी, एंड ओके, आगा खान, सलीमुल्लाह एंड आगा खान, ये दो नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सलीमुल्लाह एंड आगा खान। आगा खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो ढाका's नवाब सलीमुल्लाह एंड आगा खान, हाईलाइट कर लो, these two names are the most important names, these two names are the most important names, ढाका's नवाब सलीमुल्लाह एंड आगा खान, याद रहेगा। ओके, सलीमुल्लाह एंड आगा खान। Now what happens? Salimullah and Aga Khan. What we see now? British government provided funds. British government ने क्या provide करा है? Fund provide करा. Initial fund for the establishment of this party. And British government promised that they are committed, they are committed to protect minority rights in India. They promised that they are committed to protect minority rights in India. British government promised that we are committed to protect minority rights in India. जो यहाँ पे साजिश है, बहुत गहरी साजिश है, ध्यान से समझना है आपको। लिख लिया आपने ये फैक्ट? अब पहले वाला कॉन्सेप्ट याद करो। पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसीजन वाज टेकन, लिया गया डिसीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल का, रिलीजियस लाइंस पे लिया गया, बताया था मैंने। कोशिश क्या थी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, दिस वाज व्हाट, मुस्लिम मेजॉरिटी, इसको असम के साथ मिलाया जाए और इसको क्या किया जाए, इसका कैपिटल किसको बनाया जाए, नाम क्या है, ढाका। मुद्दा क्या था, कैसे भड़काया गया लोगों को, कहा गया अगर बंगाल यूनाइटेड है तो इन यूनाइटेड बंगाल मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी, हिंदूज आर मोर एडवांस्ड, so in jobs and employment the participation of Hindus is very high. So if this will be a separate province, okay, so in this separate province Muslims will be majority, so in jobs and employment the participation of Muslims could be ensured. मेरी बात समझ गया ना? हालांकि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन के पीछे, कम पार्टिसिपेशन के पीछे रीजंस कुछ और है, बट यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड करना, बट ये प्लान फेल हो रहा है। पीपल आर अपोजिंग द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका मतलब दिस प्लान, द फियर ऑफ गेटिंग दिस प्लान फेल्ड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज नॉट ब्रोकन। तो दूसरा दांव चला। दूसरा दांव क्या था? मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, ढाका इज द कैपिटल। नाउ मुस्लिम लीग सेज दैट वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ Muslims. British government is promising Muslim League that we will always support the Muslim rights in India.
माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट promise भी कर रही है. And at the same time, what happened? Okay, I have told you earlier that some Hindu festivals and Hindu slogans were used for the purpose of mass mobilization. And what British authorities did? Okay, they used it as an opportunity to create a rift or gap between Hindus and Muslims. Hindus और Muslims के बीच में एक gap create करने के लिए use किया. And when this Muslim League will be formed, Muslim League will start crying that we are the party of Muslims and Indian National Congress is the party of Hindus. ये साजिश का अगला फेज है कि मुस्लिम लीग को मुस्लिम पार्टी बना दो और आईएनसी को क्या साबित कर दो कि हिंदू पार्टी है. मेरी बात समझ गया ना, है ना? तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी. दैट राइट, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ मुस्लिम लीग स्टार्टेड क्राइंग दैट we are party of Muslims only, and now Muslim League started crying that we are the party of Muslims only, and Muslim League started crying that we are the party of Muslims only, and INC is the party of Hindus. INC is the party of Hindus. INC is the party of Hindus. Got it? We are the party of Muslims only, and INC is the party of Hindus. मेरी बात समझ गए? And all this was done for what purpose? To make Indian National Congress weaker, right? To make Swadeshi movement weaker, to break the unity of Hindus and Muslims, to check or to curb the growth of nationalism, growing nationalism in Bengal in particular and in India as a whole. This was done. मेरी बात समझ गया ना? So this is the entire idea. So at this point, okay, now the British authorities, were fearing from the growing popularity of Swadeshi movement. British authorities were fearing from the growing popularity of Swadeshi movement. पहला mass movement था. Now they were fearing from the growing popularity of Swadeshi movement. So read this. They started using tricks. Okay, to weaken the Swadeshi movement. Swadeshi movement को कमजोर करने के लिए they started using tricks. And what are the tricks? Right, point 1. Okay, attempts to create a rift or gap between Hindus and Muslims. Attempts to create rift or gap between Hindus and Muslims. Write one more point, that Hindu festivals and Hindu slogans were used as a pretext or a tool for this purpose. Hindu festivals and Hindu religious slogans were used as pretext or tool for this purpose. ठीक है ना? Hindu festivals were used as pretext or tools for this purpose. इसके लिए Hindu festivals were used as pretext or tool. Got it? Right. Second point. This is what? Breaking Hindu-Muslim unity. इसी को क्या कहेंगे? Right? Creating a rift between Hindus and Muslims. It means attempts to break Hindu-Muslim unity. Attempts to break Hindu-Muslim unity. Right? Second point. Okay. British authorities helped in the formation of AIML in the year 1906. British authorities helped in the formation of AIML in 1906. Helped in the formation of AIML in 1906. ठीक है? Right, third point. Okay. British authorities plus Muslim League, both British authorities plus Muslim League both
both made attempts to establish the fact that both made attempts to establish the fact that INC is a particular class party that is a party of Hindus. Both made attempts to establish this fact that Indian National Congress is a particular class party that is okay an exclusive party of Hindus. Okay, write this point that this was an attempt to weaken the structure of Indian National Congress. ये कोशिश थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रक्चर को कमजोर करने की. ओके, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू ओके वीकन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द पर्पस वाज टू कर्ब और टू चेक द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. इन सब का पर्पस यही था कि इंडिया में इंडियन नेशनलिज्म के ग्रोथ को रोका जा सके. द पर्पस वाज टू कर्ब और टू चेक द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. दिस वाज द मेन पर्पस. गॉट इट. तो कितना खतरा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, आप समझ गया ना. कॉन्सोलिडेटेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत खतरा था. और ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज्यादा खतरा किस बात से था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज आल्सो फियरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. सो राइट दिस, British government was also fearing from the economic aspects of Swadeshi movement. Now we need to understand that what is this economic aspect of Swadeshi movement. So देखो, in colonial rule we all know that in colonial rule, when we say colonial rule, so we are taking the period from 1757. India colony कब बना? 1757. उसके पहले कॉलोनी नहीं था. कल एक मैं वीडियो देख रहा था तो एक टीचर बताया जा रहे थे कि 1600 से इंडिया कॉलोनी था. ठीक है, अब बच्चे सुने जा रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया वाज अ कॉलोनी. इंडिया बिकेम अ कॉलोनी इन विच ईयर 1757. थोड़ा सा अलर्ट रहना है इन चीजों में. ठीक है ना. इंडिया बिकेम अ कॉलोनी इन विच ईयर 1757. बिकॉज कॉलोनी में दो चीजें होती है. वन इज कॉलोनी में डायरेक्ट रूल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रूल भी हो सकता है. दिस इज द फीचर ऑफ कॉलोनियलिज्म. तो 1757 से 1858 तक क्या था? इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इनडायरेक्ट रूल इज आल्सो द फीचर ऑफ कॉलोनी. ठीक है, जब इनडायरेक्ट रूल है तो उसको भी क्या समझा जाएगा? कॉलोनी समझा जाएगा. बट इसके पहले कॉलोनी नहीं समझा जाएगा. इंडिया वाज नॉट अ कॉलोनी बिफोर 1757. और अभी बात क्या चल रही है? स्वदेशी मूवमेंट की. 1858 से नाउ वी आर रीडिंग दिस पीरियड 1905 to 1908. ठीक है, कॉलोनियल रूल. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर? देखो, ड्यूरिंग दिस एंटायर फेज the main purpose of British was to increase their exports, increasing the export of Britain and changing or transforming the nature of Indian economy. यही था ना. You all know this कि इंडिया को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्टर से क्या बना दिया गया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स. And for this, British used a strategy. And what is that strategy? Discriminatory trade practices. British ने क्या strategy use करी थी? Discriminatory trade practices. British used this strategy of discriminatory trade practices. What are the different components of this discriminatory trade practices? So one component is okay non-uniform. One component is discriminatory tariff, unfair tariff, unfair tariff was used. unfair tariff ऐसा करके नुकसान पहुंचाया. और कैसे नुकसान पहुंचाया ये सब आपको पहले बता दिया हूं. परचेसेस, इन्वेस्टमेंट्स कॉन्सेप्ट याद आया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेसेस और इन्वेस्टमेंट्स? British were purchasing raw materials from India with the revenues that they were generating from India. इंडिया के पैसे से ही इंडिया का रॉ मटेरियल खरीदना, ये काम कर रहे थे. एंड the duty of the government is to give official help and support to Indian industries. And they were doing what? Were they giving official help and support or they were doing official discrimination? Official discrimination and suppression. Okay, so write this point.
that official discrimination, government was discriminating, official discrimination, official suppression, instead of giving official help and support, instead of giving official help and support, official discrimination, official suppression, instead of giving official help and support. मेरी बात समझ गया? The government was doing this discriminatory trade practices. Okay. Now, what is the स्वदेशी strategy? अब स्वदेशी strategy हमें क्या करना है? हमारा फंडा एकदम क्लियर है. Okay. Nationalist protectionist sentiment were promoted. Protectionist measures. आज भी कई बार आप पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स अपनाती है, बट यहाँ पे लोगों ने प्रोटेक्शनिस्ट मीजर अपनाया. और वो प्रोटेक्शनिस्ट मीजर क्या था? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करना और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करना, ये था प्रोटेक्शनिस्ट मीजर. तो स्वदेशी मूवमेंट प्रोटेक्टेड सम प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स फॉर इंडियन बिजनेसेस. इट प्रमोटेड सम प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स फॉर इंडियन बिजनेसेस. इंडियन बिजनेसेस के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स को प्रमोट किया. एंड ये प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स क्या है? इट प्रमोटेड सम प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट बिजनेसेस. एंड व्हाट आर दीज प्रोटेक्शनिस्ट मीजर्स? सो वेरी सिंपल. ओके, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, कि लोगों के अंदर वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स फ्यूल करो जिसकी वजह से वो स्वदेशी गुड्स को ही परचेस करें, स्वदेशी गुड्स और इंडिजिनस गुड्स को ही प्रमोट करें, इवन इफ दे आर एक्सपेंसिव. ये तभी आ सकता है जब राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाए. द पीपल विल यूज स्वदेशी गुड्स इवन इफ इट इज expensive. They will not care for this, that it's expensive or cheaper. They will use it, they will purchase it even if it is expensive. So this will give two benefits. First, Indian industries will get benefited. The British industries will suffer loss. और एक्सपेंसिव इंडियन गुड्स को खरीदने के साथ ही लोगों में एंटी ब्रिटिश और एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी प्रमोट किया जा सकेगा. मेरी बात समझ गया ना? खादी पहनना स्वाभिमान की बात हो गई. मेरी बात समझ गया? So that is most important thing, that the people are purchasing expensive, they are supporting local goods, they are supporting local industries even if they are expensive. And at the same time, this became the symbol. For example, charkha will become the symbol. Okay, and this charkha become the symbol of nationalist sentiments, and this charkha become the symbol of anti-British sentiments or imperialist sentiments also. Okay, and this promotion of Swadeshi was capable of bringing economic freedom in India. अगर आप स्वदेशी को प्रमोट करोगे, so it was capable of bringing economic freedom in India, and this will create new demand for the indigenous goods. याद करो, वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करके ब्रिटिश क्या करना चाह रहे थे? They wanted to create new demand for the western goods. Now the movement will create new demand for the indigenous goods. So what will happen? If new demands will be created, if new demands will be created for indigenous goods, so in this situation, indigenous industries will also be promoted, and this will also motivate or encourage indigenous capitalists, okay, to set up new enterprises that are indigenous. इससे इंडियन कैपिटलिस्ट को भी इस बात के लिए प्रेरणा मिलेगी कि वो नए बिजनेसेस सेटअप करें, और ये नए बिजनेसेस क्या हो? इंडियन enterprises. That is the most important part. Got it? So these are the economic aspects of Swadeshi movement, very important. Okay? And before 20 years, okay, one famous industrialist, capitalist, okay, had said that, कल की क्लास में बताया था मैंने कि economic self sufficiency is very important before the political
freedom of India. Now, what are the political aspects of Swadeshi movement? This we need to understand. So the second part is, what are the political aspects of Swadeshi movement? Political aspects क्या है? That is a very important part. Political aspects of Swadeshi movement. ठीक है ना? Now, till now, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, 1905 में, ठीक है? And before this period, from 1885 to 1905, INC was the Indian national political party. It was dominated by moderates. It was dominated by moderates, and they believe in British sense of justice. For nearly 20 years, INC kept believing in what? INC kept believing in British sense of justice. British sense of justice. इनको ये लग रहा था कि अंडर द ब्रिटिश लीडरशिप, ओके, ब्रिटिश रूल इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, और यू कैन से दैट फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. अब तक ये लग रहा था, एंड दैट्स व्हाई टिल नाउ, अभी तक, डिमांड फॉर स्वराज वाज नॉट ऑफिशियली रेज्ड. ऑफिशियली कभी भी स्वराज की बात की ही नहीं गई. ये बहुत बड़ी बात है. In these 20 years, officially, I am using the word officially, the demand for Swaraj was not raised. But the things will be changed now. And what is the important part here that we need to understand? Okay, so write this point that 1905 INC session, 1905. The second important session, 1906. 1905 session कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? Any one of you? I have discussed it previously. Where? Which place? नहीं, 1905 सेशन ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस, वेयर इट टुक प्लेस. बताया था आपको, बनारस. याद आया? अच्छा, हु वाज द प्रेसिडेंट, ये बताओ. चलो, very good, very good. Okay, so write this. 1905 session was, INC session was held at Banaras, and the president in this session was Gopal Krishna Gokhale. ये प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ. जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के लिए, जहां से अंदर से जाके क्वेश्चन पूछ के आपको उलझा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा. ठीक है ना? तो ध्यान रखना है. 1905 जितना बताऊं वो तो एटलीस्ट मत भूलो आप लोग. ठीक है? 1905 session was held at Banaras, and the president was Gopal Krishna Gokhale. 1906 session, it was held in, जल्दी बताओ क्या है? Very good. And the president was दादा भाई नौरोजी. लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी. अब यहां देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं. 1905 सेशन में, ओके, राइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज और द आइडिया ऑफ स्वराज was first discussed, पहली बार डिस्कस किया गया. The idea of Swaraj was first discussed on the official platform of INC. पहली बार, right? The concept of Swaraj was discussed from the official platform of Indian National Congress. पहली बार the concept of Swaraj was discussed from the official platform of Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे मेंबर्स तो होंगे ना, मॉडरेट्स भी होंगे एंड एक्सट्रीमिस्ट भी होंगे. सो मॉडरेट्स विल डिस्कस देयर मीनिंग एंड एक्सट्रीमिस्ट विल डिफाइन देयर मीनिंग. ध्यान से समझो, यहाँ पे केवल डिस्कशन हो रहा है. ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इज डिस्कस्ड. इट मींस हियर द मीनिंग ऑफ स्वराज विल बी डिस्कस्ड, एंड नाउ टू मीनिंग्स वर डिस्कस्ड. यहाँ पे कितने मीनिंग्स डिस्कस हुए? Two meanings were discussed. One meaning for the moderate and the second meaning for the extremist. Concept of Swaraj was discussed. One meaning was for the moderates and the second meaning was for the extremists. Moderate meaning क्या था? पहले बता चुका हूँ.
स्वराज, सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट. मेरी बात समझ गया? When Indians will take care of their administration, political system, but here they are not saying that uproot of British rule. Uproot of British rule की बात नहीं की जा रही है. ये कहा जा रहा है कि largely the administration will be carried out by the Indians under the guidance of British. This is moderate meaning. And what is extremist meaning? Okay, extremist meaning, this means complete self rule, no need for British. They don't believe in British sense of justice. तो ये डिस्कशन हो. अच्छा एक बात बताओ, 1906 मॉडरेट्स क्या एक्सट्रीमिस्ट क्या सोच रहे थे कि अगर आईएनसी प्रेसिडेंट कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन जाएगा तो हमारे डेफिनेशन को ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिल जाएगी. ध्यान से समझो, मॉडरेट्स की कोशिश क्या है? that INC should give official acceptance to which definition? Moderate definition. Extremists की कोशिश क्या है? That INC should give acceptance, official acceptance to which definition? Extremist definition. So both are trying कि प्रेसिडेंट हमारा वाला बन जाए. अगले साल क्या होता है? दादा भाई नौरोजी becomes president. अब दादा भाई नौरोजी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स चुप, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी है तो फिर तो जो उनको मन में आए वो करें, है ना, उसका विरोध कोई नहीं करेगा. नाउ व्हाट विल हैपन हियर? रेड दिस definition of Swaraj. Definition of Swaraj was given official acceptance of INC. Definition of Swaraj was given official acceptance by INC. It means अगर आपसे कोई पूछे कि स्वराज एज अ पॉलिटिकल डिमांड पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब इसको एक्सेप्ट किया, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 1906. ठीक है ना. नाउ द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज स्वराज फ्रॉम 1906. अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की पॉलिटिकल डिमांड क्या हो गई? स्वराज. पहली बार याद रखना, 1906 में पहली बार हमने कौन सी डिमांड रेज की? स्वराज. बिकॉज ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिलता है इस डिमांड. और विच मीनिंग वॉज अप्रूव्ड हियर? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट? moderate meaning. So write this. Okay, official acceptance of moderate meaning of Swaraj. यहाँ पे official acceptance है of moderate meaning of Swaraj. स्वराज की जो moderate meaning है इसको official acceptance दी गई. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आपसे कहूं कि क्या स्वराज इंडियन नेशनल मूवमेंट का पॉलिटिकल डिमांड था फर्स्ट फेज में? द आंसर इज नो. स्वराज इंडियन नेशनल मूवमेंट की डिमांड क्या है? इट्स नॉन यूनिफॉर्म, समय समय पे ये बदल रही है. 1906 में व्हाट इज द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? स्वराज. एंड द मीनिंग इज मॉडरेट मीनिंग ऑफ स्वराज. सेल्फ रूल बाय इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ ब्रिटिश. Here we are not saying completely approved British rule. ये हम नहीं कह रहे हैं. And officially this political demand was accepted in 1906. Where the session was held? Calcutta. Who was the president? Dadabhai Naoroji. If the question asks that when the idea of Swaraj was first discussed from the official platform of Indian National Congress, so what will be the answer? 1905. How many meanings were discussed? Two meanings. And 1906 में which meaning was approved? One meaning. That is moderate meaning. अच्छा, थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर को? नहीं आएगा? नहीं आएगा, थोड़ा गुस्सा आएगा. लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन है? दादा भाई नौरोजी. तो वो कुछ नहीं कहेंगे. नाउ दे विल वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. अच्छा, दो प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है, याद है ना आपको? देयर आर टू मोर इश्यूज बिटवीन डेडलॉक बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. दो और मुद्दे पहले से चले आ रहे हैं और ये कौन सा मुद्दा हो गया? तीसरा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सूरत सेशन. सूरत सेशन तो आपने देखा 1905 सेशन, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू 1906 सेशन, एंड नाउ इन द सेम सीरीज राइट 1907 सेशन. 1907 session of Indian National Congress, and this session was held in Surat.
ये सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ? सो दिस सेशन वाज हेल्ड इन सूरत। अब देखो क्या था, 1905 गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट। गोखले वाज मॉडरेट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर? मॉडरेट लीडर। गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? एमजी रानडे, मॉडरेट लीडर, ठीक है। 1906 हु इज द प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी, मॉडरेट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर? मॉडरेट लीडर। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? 1905. Now, Swadeshi movement started. The idea was first suggested by whom? Extremists. Later, it was supported by whom? Moderates. Finally, it was supported by official platform of Indian National Congress. Indian National Congress ने इसको सपोर्ट कर दिया था। अब उसके बाद से लगातार इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कि कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर आईएनसी प्रेसिडेंट बन जाए। 1905 onwards, 1905 SM started, Swadeshi movement started, and now extremist leaders and their supporters, extremist leaders and their supporters made efforts, उन्होंने अपने प्रयास किए, so that INC president could be, the newly elected INC president could be any extremist leader, कोई extremist leader बने, इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। बेसिकली दे वर ट्राइंग फॉर तिलक और लाला लाजपत राय, उनकी कोशिश ये थी, तिलक और लाला लाजपत राय, दे वर मेकिंग एफर्ट्स कि अगला आईएनसी प्रेसिडेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो। क्यों कोशिश कर रहे थे? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर बनते ही उनके कई डिमांड एक्सेप्ट हो जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। दे वर मेकिंग एफर्ट्स। 1905 गोखले मॉडरेट लीडर प्रेसिडेंट बन गए, अभी भी दबदबा मॉडरेट्स का था। 1906 उन्होंने जानबूझ के लाके दादा भाई नौरोजी को खड़ा कर दिया, फिर मामला बिगड़ गया, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट हो गए। फिर 1907 में ओके दे विल ब्रिंग अगेन रास बिहारी घोष, राइट दिस, रास बिहारी घोष अगेन। रास बिहारी घोष इज अ मॉडरेट लीडर, ही बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट, ठीक है। एक बोस भी है, बोस रिवॉल्यूशनरी है, रास बिहारी बोस, दिस इज घोष, ध्यान रखना। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पढ़ते वक्त यहाँ अलर्ट रहना है, ब्रैकेट में लिख लेना नॉट बोस, दिस इज घोष, लिखो वहां पे, नहीं तो प्रीलिम्स में जानबूझ के नेम्स इंटरचेंज किए जाते हैं, जल्दबाजी में हम गलत कर दें, ठीक है। अब आप बताओ कितने डेडलॉक के इश्यूज हो गए? हाउ मेनी इश्यूज ऑफ डेडलॉक बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? स्वदेशी मूवमेंट इज इन प्रोग्रेस, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है 1905 टू 1908, ठीक है। And there are three main issues of deadlock. Deadlock के लिए between moderates and extremists, there is deadlock, इनके बीच में गतिरोध है, and there are three main issues of deadlock. Three main issues of deadlock. कौन कौन से issues हैं? Now I think that you all know these three main issues. पहला क्या होगा? Extension of Swadeshi movement outside Bengal region, I have already discussed. Extension of Swadeshi movement outside Bengal region. दूसरा क्या है? Exactly, passive resistance to be adopted as official program, ठीक है। और तीसरा क्या है? Recognition of moderate meaning of स्वराज का यार, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग, रिकग्निशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग ऑफ स्वराज का यार। अभी भी तुमको ये समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस से कुछ होने वाला है? अभी भी आपकी अकल घास चरने गई है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो रिकग्निशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मीनिंग ऑफ स्वराज, ये तीन मुद्दे हैं। और यहाँ पे पेशेंस देखो एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कितना है। 1905 में वेट किया, 20 इयर्स पहले भी वेट किया, 1885 टू 1905 डोमिनियन किसका था? मॉडरेट्स का। 20 इयर्स का वेट वहां हो गया। फिर 1905 में मॉडरेट प्रेसिडेंट, 1906 में मॉडरेट प्रेसिडेंट, 1907 में मॉडरेट प्रेसिडेंट। अब इनके सबर का बांध टूट गया, और जब सबर का बांध टूट गया तो दे विल डू व्हाट? आदमी गुस्से में क्या होता है? चिल्लाता है, चीखता है, ठीक है, कुर्सी मेज तोड़ डालता है, वही हुआ, राइट।
दे स्टार्टेड शाउटिंग, काउंटर शाउटिंग, ब्रेकिंग ऑफ चेयर्स, अपनी पगड़ी वगड़ी उखाड़ के फेंक दी, ठीक है, गुस्सा दिखाया। और जैसे ही गुस्सा दिखाया, इट मींस 1907 सूरत सेशन, व्हाट इज हैपनिंग, राइट दिस, the extremist, read this, extremist leaders and their supporters, okay, extremist leaders and their supporters, right, were unhappy with this decision, and unhappy with this decision, and okay, they started shouting, raising slogans, breaking up of chairs, shouting, raising slogans, breaking up of chairs, unrolling their turbans, breaking up of their chairs, unrolling their turbans. Okay, finally, right, disciplinary action was taken against extremists. Finally, what happened? Disciplinary action was taken against extremists. Disciplinary action was taken against extremists. And extremists were out of Indian National Congress. Extremists were out. They were expelled from Indian National Congress. तो 1907 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में केवल मॉडरेट्स रह जाते हैं, एंड नाउ एक्सट्रीमिस्ट्स वेयर थ्रोन आउट. इनको बाहर कर दिया गया. एक्सट्रीमिस्ट्स वेयर थ्रोन आउट, एंड दिस इज कॉल्ड सूरत स्प्लिट. स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, यही तो है सूरत स्प्लिट. स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, याद रहेगा ना. सूरत स्प्लिट इज व्हाट? स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स. आप ये बताओ, अगर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हो गया, इज इट लाइक दैट यूनिटी वाज ब्रोकन? क्या ये ऐसा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएगी? हाँ. क्या ब्रिटिश पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई? हाँ. ठीक है. तो इसके बाद देखो 1907 के बाद इसी चेन में राइट टू मोर फैक्ट्स हियर, वो भी लिख लो, तो दैट विल बी इन अ क्रोनोलॉजी, एक क्रोनोलॉजी में रहेगा, राइट. 1908 सेशन, 1909 सेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. 1908 सेशन, राइट, was held at Madras and president was the same, रास बिहारी घोष. मद्रास में ये सेशन हुआ और प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं रास बिहारी घोष, द सेम प्रेसिडेंट. तो एक फैक्ट तो ऐसे ही याद रहेगा कि 07 में भी रास बिहारी घोष थे, और जो अगला सेशन है वहां पे भी रास बिहारी घोष थे. 1908. 1909 में, राइट, द सेशन वाज हेल्ड इन लाहौर. ये सेशन कहाँ पे हुआ? लाहौर में. एंड एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय was the president. मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट. गॉट इट. बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका यही तीनों सेशन था, ठीक है ना. बट आपने क्रोनोलॉजी में लिख ली तो चीजें याद रहेंगी. अब देखो क्या समझना है हमें. सूरत स्प्लिट हैज टेकन, नाउ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ओके, स्प्लिट हैज हैपेंड, दोनों के बीच में स्प्लिट हो चुका है. दे आर आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या हो गए? बाहर चले गए. अब कहानी देखो. Swadeshi movement was extended to 0708. Why I have written? There is a reason. That Swadeshi movement is continued. Swadeshi movement क्या है? Continued है. 1907 में क्या हो गया? सूरत split. सूरत split. Now the unity of moderates and extremists was broken. Moderates were now still in Indian National Congress, but extremists are out of Indian National Congress. एक्सट्रीमिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाहर हो गए. नाउ द ब्रिटिश पॉलिसी, व्हाट विल बी द ब्रिटिश पॉलिसी इन दिस सिचुएशन? यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी क्या होगी? अगेन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. फिर से ब्रिटिश की हो गई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. एंड व्हाट इज दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश? सो राइट, दिस पॉलिसी इज नोन एज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज नोन एज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी.
And what is this carrot and stick policy? This we need to understand. क्या है carrot and stick policy? तो देखो, carrot किसके लिए? Moderates के लिए. और stick किसके लिए? Extremists के लिए. Very simple. So what is carrot and stick policy? The carrot for the moderates and stick for the extremists. This is carrot and stick policy. Carrot for the moderates and stick for the extremists. मेरी बात समझ गए? तो carrot क्या है moderates के लिए? This we need to understand. तो moderates believed in what? Negotiations. ठीक है? Talks. They have faith in British sense of justice. उनको लगता है कि British will finally bring reforms in India. तो British will promise them. आप वादे में यकीन करते हो तो वो वादा दिलाने में यकीन रखते हैं, तो आपको वादा दिलाएंगे, वादा करेंगे कि वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, सम लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, वी विल ब्रिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड ऑल योर पेंडिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड. आपके सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, बस शांति से बैठो. हैव अगेन faith in British government. British sense of justice में यकीन करो, all your pending political demands will be addressed. Now moderates will have faith or belief on this promise. इस वादे पे यकीन कर लेंगे. ठीक है ना? ये क्या हो गया? कैरेट. आपने एक ग्रुप को क्या कर दिया? अपीस कर दिया. ठीक है ना? So write this point. Okay. क्या है कैरेट policy for the moderates? Write this. British promised that very soon, all the pending, British promised moderates that very soon all their pending political demands will be addressed by the British government. They promised that very soon all their pending political demands will be addressed by the British government. They promised that very soon all their pending political demands will be addressed by the British government. जल्दी ही आपके सारे के सारे political demands क्या हो जाएंगे? Address हो जाएंगे. Got it? Okay. And what is for the extremists? Extremists के साथ क्या करेंगे? अब तो extremists out of Indian National Congress ना. पहले क्या था? extremists को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बन के कौन आगे आ जाता था? मॉडरेट्स. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती यूज ऑफ फोर्स, तो हु विल कम टू कन्विंस ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट टू यूज फोर्स? मॉडरेट्स. अब एक्सट्रीमिस्ट्स आर आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. राइट दिस. नाउ फॉर एक्सट्रीमिस्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट विल यूज ऑपरेसिव मेजर्स. फॉर द एक्सट्रीमिस्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट विल यूज ऑपरेसिव मेजर्स. All popular extremist leaders were arrested. All popular extremist leaders were arrested and their followers were forcefully suppressed. Brutal suppression or repression of extremists and their followers. Brutal suppression and repression of extremists and their followers. ये काम हो जाएगा. Brutal suppression and repression of extremists and their followers. Brutal suppression and repression of extremist leaders and their followers. Now I'm asking a simple question. This was a mass movement. Mass was participating, but leadership कौन कर रहा था? Moderate leader or extremist leaders? Now moderate leaders are appeased, extremist leaders are suppressed. So what will be the future course of movement? The movement will gradually decline, and this also shows that okay, the unity of INC was broken. British are successful in their strategy. ठीक है ना? So what will happen as a result? Right? This gradually, the intensity of Swadeshi movement will become weaker. धीरे धीरे स्वदेशी movement की intensity क्या हो जाएगी? Weaker. Gradually, the intensity of the Swadeshi movement will become weaker. This is one part. Gradually, the intensity of Swadeshi movement is weaker. Now,
आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे एक झगड़ा लगा दिया अंग्रेजों ने किसके किसके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर दिया, दिस इज स्प्लिट, दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, was the British policy successful in creating gap between Hindus and Muslims? Yes, to some extent it was successful. So write this point. British policy to some extent, to some extent, to some extent was also successful, was also successful in creating the gap or breaking the unity of Hindus and Muslims. British policy to some extent was also successful in creating the gap and breaking the unity of Hindus and Muslims. यहाँ भी successful थी British policy to some extent. It was successful in creating the gap and breaking the unity of Hindus and Muslims. You all know how. तो इसमें कितने मुद्दे हैं? How many issues? First, okay, use of religious festivals and symbols was one of the serious limitation of Swadeshi movement. Very important. Use of religious festivals and symbols was one of the serious limitations of Swadeshi movement. ये हमने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली हुआ। अंग्रेजों ने इस मुद्दे का फायदा उठा के लड़ाई करवाई, गैप क्रिएट किया। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस वाज वन ऑफ द सीरियस लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, राइट? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? ओके, मुस्लिम लीग वाज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल बट स्टिल इट वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। कुछ मुस्लिम मासेस को तो कन्विंस कर ही लिया ना, ठीक है? तो राइट दिस, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट? To some extent, Muslim League was also successful in convincing the Muslim masses. Read this. To some extent, Muslim League was also successful in convincing the Muslim masses that their rights are more protected under British rule. To some extent, Muslim League was also successful in convincing the Muslim masses that their rights are more protected under the British rule. कि उनके rights क्या है? British rule के दौरान ज़्यादा protected है, right? That's one important point. And what will happen? The third and the most important point. Read this. Okay, Act of 1909, and this is also known as Morley-Minto reforms. Act of 1909, and this is also known as Morley-Minto reforms. इसको और हम किस नाम से जानते हैं? Morley-Minto reforms. And why this Morley-Minto reforms is important? Okay, तो इस बात को भी समझते हैं, right? 1909 Act of 1909, Act of 1909, and this is also known as Morley-Minto reforms. समझो इस बात को। After Surat split in 1907, what the British promised? ब्रिटिश ने क्या प्रॉमिस किया था मॉडरेट्स को? ये प्रॉमिस किया था कि soon we will bring some reforms, we will bring a legislation and through which all your political demands will be addressed. और नाम भी इसका क्या दिया है, ध्यान से देखो, रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, यही प्रॉमिस किया था ना? तो आईएनसी वाज एनेक्सियसली वेटिंग फॉर दीज रिफॉर्म्स। आईएनसी को इंतजार था इस रिफॉर्म का। 1909 में ये रिफॉर्म आया, एंड इन दिस रिफॉर्म वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना? बट यहाँ पे सिंपली समझो, इन दिस एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन दैट इज SES for Muslims, separate electorate system for Muslims. There was a provision, and the provision for, read this, the provision for SES for Muslims, the provision for separate electorate system for the Muslims, ये provision था, clear? और इसका मतलब क्या है? separate electorates, for example,
यू यूज दिस वर्ड ना, इलेक्टोरेट्स टुडे, इलेक्टोरेट्स टुडे, ठीक है। इन द सेम वे some electorates will be treated as separate. Why separate? Because there will be some special privilege or concessions in these electorates. That's why they are called separate electorates. मेरी बात समझो। Joint electorate का मतलब क्या हो गया कि all the electorates will be treated, okay, in a similar manner. But separate electorate means some electorates, कुछ निर्वाचन क्षेत्र, they will be treated separately. Why? Because some special relaxations will be given to them. और वो electorates कौन से होंगे? So those areas which are Muslim majority areas, those areas which are Muslim majority areas will be treated as separate electorates. देश के बंटवारा का आधार तो यहीं से बना रहे हो आप। Those areas which are Muslim majority areas will be treated as separate electorates. जैसे मान लो कि suppose this is India, British India की बात मान लेते, suppose these areas are the areas where Muslims are, Muslim population is the majority population. तो देखो in context of all India के context में Muslims were minorities. Muslims क्या थे? Minorities. All India context में अगर आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट का प्रोविजन लोगे तो मुस्लिम्स विल बी माइनॉरिटी, बट इन सम पॉकेट्स, some selected pockets, these are what? Some selected pockets. These are some selected pockets or areas. Or in selected pockets or areas में what we see that Muslims are majority population. यहाँ पे Muslims क्या है? Majority population. In some selected pockets what we see that Muslims are majority population. Muslim क्या है? Majority population. In some selected pockets or the areas, Muslims are majority population. Got it? अब देखो in these selected pockets what will happen? There will be separate electoral rolls, right? Registers. The candidates will be Muslim candidates only. Candidates will be Muslim candidates ओनली। यहां से केवल और केवल कौन इलेक्शन लड़ेगा? मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, आज के टाइम में क्या है? राइट टू वोट के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो क्या है? राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन है। यहाँ पे क्या है? हु विल कंटेस्ट इलेक्शन? ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो बताओ अगर ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो क्या यहाँ पे अदर माइनॉरिटीज होंगे कि नहीं? यस और नो? यहाँ पे दूसरे माइनॉरिटीज भी तो होंगे। देयर विल बी अदर माइनॉरिटीज आल्सो। यहाँ पॉसिबल है कि हिंदू माइनॉरिटी हो। सो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी? यहाँ पे क्या आप हिंदू माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक स्पेशल प्रोविजन ला रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, और कह रहे हो कि यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स को बेटर ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट इसी एरिया में दूसरी माइनॉरिटीज का क्या? सो इज इट अ सॉल्यूशन? इफ इन ऑर्डर टू फाइंड a solution for the minorities, if you are creating new challenges for other minorities, is this the solution? क्या ये solution है? नहीं। और आज जब आप इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के इलेक्टोरेट्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तरह ट्रीट करोगे तो इस बात की संभावना है कि नहीं कि इन फ्यूचर दे कैन डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन। आज सेपरेट इलेक्टोरेट है, कल को किस चीज की मांग कर सकते हैं? सेपरेट नेशन की मांग कर सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल कितनी खतरनाक थी। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू अपीज मुस्लिम मासेस। ये वही मुस्लिम मासेस हैं जिनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। पता है आपको? सेलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑन द मुस्लिम्स, and British government was considering that 1857 revolt was a result of conspiracy of Muslims. मुस्लिम एलिट क्लास को हटा के ब्रिटिश रूल आया था और ब्रिटिश रूल रिएक्शनरी था अगेंस्ट द मुस्लिम्स। नाउ द सेम ब्रिटिश रूल is supporting
Muslims and they are supporting Muslims. Is it true that they are trying to protect minority rights? No. They are trying to create a gulf between Hindus and Muslims. क्योंकि उनको स्वदेशी मूवमेंट में दिख चुका है यूनिटी ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. सो इन द नेम ऑफ गिविंग एससीएस फॉर द मुस्लिम्स, देखो तरीका क्या था. मुस्लिम लीग ने डिमांड किया दैट वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स. 1906 में मुस्लिम लीग को बनवाया किसने? अंग्रेजों ने. फिर मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. उनको ये बुद्धि किसने दी थी? अंग्रेजों ने ही दी थी. पार्टी भी बनवाई उन्होंने ही, आइडिया भी दिया उन्होंने कि तुम मांगो, मुझसे मांगो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. मांगना शुरू किया मुस्लिम लीग ने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देना चाहिए. और फाइनली सुन भी लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट. दूसरे डिमांड्स इनको सुनाई नहीं दे रहे थे, ये वाला सुनाई दे दिया. 1909 Parliamentary reforms announced that we will give what? SES for Muslims. And this is what? This is like, okay, you can say this is like sowing the seeds of communalism in India. भारत में संप्रदायवाद के बीज को बोने जैसा है. This is like, okay, teeth of communal dragon. SES for the Muslims. Write this. Okay, Muslim League demanded for the SES for Muslims. Write this. Muslim League demanded for SES for Muslims. Muslim League demanded for SES for Muslim minorities. Muslim League demanded SES for Muslim minorities. Right, next point. Morley Minto Reforms 1909. Morley Minto Reforms 1909 announced to give Morley Minto Reforms 1909 announced to give SES for the Muslims. इसने मुस्लिम्स को SES देने का अनाउंसमेंट कर लिया. ठीक है, announced to give SES for the Muslims. Right, next point. Okay, read this. Read this. SES for Muslims was like giving SES to the Muslims was like sowing the seeds of Indian communalism. Giving SES to the Muslims class was like giving SES to the Muslim class was like sowing the seeds of Indian communalism. It was like sowing the seeds of Indian communalism. ठीक है ना? Giving SES to the Muslim class was like sowing the seeds for the Indian communalism. Right, next point. It was also like the teeth of communal dragon in India. It was also like the teeth of communal dragon in India. It was also like the teeth of communal dragon in India. Got it? आपको समझ में आएगा? तो in this situation when Hindu Muslim unity वो रिटेन नहीं रह पाएगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे, तो स्वदेशी मूवमेंट को वीकर तो होना ही है. The same happened. Swadeshi movement becomes weaker and it gradually declined. Now, participation of masses. Write this point. Participation of masses in Swadeshi movement. Participation of masses in Swadeshi movement. This also we need to understand. Participation of masses. अब आपको समझ में आया क्यों मैं लिखता हूं यहां 0708. 07 में सूरत स्प्लिट हुआ and after this gradually the movement declined till 1908. That's why we are writing 0708. तो देखो, this Swadeshi movement is known as first mass movement in India. First mass movement in India. But the first mass movement of Gandhi is known as first great mass movement in India. Why? Because here we see limited participation of the masses. और गांधी के मूवमेंट में we see wider participation of the masses. Clear? तो देखो यहाँ पे mass movement है और पहला mass movement है, first mass movement. So obviously it will have some limitations. Obviously it will have some limitations. कुछ तो इसकी limitations रहेंगी ना, because there are limitations of the people also. उनको भी मास मूवमेंट्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है. गॉट इट? तो देखो, read this. Okay, it failed to attract
it failed to attract wider participation of masses, wider participation of masses. But yes, there was limited participation. Yes, there was limited participation. Limited participation था, ठीक है? Right. Massive participation of school and college students, ये है भाई. Massive participation of school and college students. इन्होंने past tense में students participation एक remarkable feature है. Right? This is student participation. This is called student participation. It was massive. Okay. The right next point. This movement was mainly confined in urban areas. This movement was mainly confined in urban areas. ये movement mainly कहाँ confined रहा? Urban areas में. ठीक है? Urban areas में confined रहा. Right this? Okay. It was mainly led by upper class, upper middle class and class of जमींदार्स. ठीक है? लीडरशिप में यही लोग थे. Big lawyers, professors, upper middle class, upper class, class of zamindars. These people were there. This was also successful in attracting, read this, massive participation of women. ये भी रहा. Massive participation of women, massive participation of students. These two are the remarkable feature. Massive participation of women. Women ने क्या किया? Picketing of liquor shops were done by women. शराब की दुकानों को घेर लिया. ठीक है? तो इससे दिक्कत हो गई. ठीक है, शराब बिकना बंद हो गया. ठीक है, ओके. मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, ये सबसे इनका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था. ठीक है, राइट. मुस्लिम मासेस पार्टिसिपेशन, मुस्लिम मासेस पार्टिसिपेट किया, बट देयर पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, नॉट फुल पार्टिसिपेशन. बट गांधी का जो एनसीएम होगा वहां पे क्या है? फुल पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. ओके, राइट. लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स. पीजेंट्स और वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन क्या रहा? दैट वाज लिमिटेड पार्टिसिपेशन. लिमिटेड participation of peasants and workers. Got it? That is also an important information. Limited participation of peasant and worker. अच्छा, गांधी का जो मूवमेंट होगा उसमें क्या होगा? लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगा पीजेंट एंड वर्कर्स का? नहीं, फुल पार्टिसिपेशन. क्योंकि गांधी स्टार्ट करते हैं अपना मूवमेंट, मतलब अपना जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट है चंपारण से, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा. तो गांधी में कुछ चीजें ऐड होंगी. तो यहाँ पे क्या लिखा? पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, बट द पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड. नाउ राइट, नेक्स्ट एक और पॉइंट है. दिस मूवमेंट वाज मेनली कन्फाइंड इन बंगाल रीजन. ये ऑल इंडिया मूवमेंट था कि नहीं? वाज स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट? क्या स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट था? तो द आंसर इज ऑफिशियली नॉट. ऑफिशियली नॉट. ऑफिशियली नॉट. ऑफिशियली इट वाज नॉट ऑल इंडिया मूवमेंट. ऑफिशियली ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था. इट वाज ऑफिशियली कन्फाइंड इन विच रीजन? बंगाल रीजन. रेड दिस, ऑफिशियली कन्फाइंड टू बंगाल रीजन ओनली. It was officially confined to Bengal region only. Again, I am writing here word officially. It was officially confined to Bengal region only, but unofficially, it was extended to other parts of India also. Unofficially, it was extended to other parts of India also. Example, unofficially ये दूसरे हिस्सों में भी पॉपुलर था. Example, right? Punjab and some parts of northern India. Example, Punjab and some parts of northern India. Under the leadership of Lala Lajpat Rai, यही से तो आते थे. तो लाला लाजपत राय, पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लाला लाजपत राय. दिल्ली में भी स्वदेशी मूवमेंट पॉपुलर था, और यहाँ पे लीडर है सैयद हैदर रजा. सैयद हैदर रजा.
रजा, सैयद हैदर रजा। तो देखो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। मद्रास में भी एक्सटेंशन था अंडर द लीडरशिप ऑफ चिदम्बरम पिल्लई, अंडर द लीडरशिप ऑफ चिदम्बरम पिल्लई। इन मद्रास also it was extended to पूना also, बॉम्बे also। पूना में भी पॉपुलर था, बॉम्बे में भी पॉपुलर था, अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक, तिलक की लीडरशिप। But officially, that's in some other parts of India also. You can write in some other parts of India also. इंडिया के कुछ दूसरे हिस्सों में भी पॉपुलर था। Got it? In some other parts of India also. तो ये क्या ऑफिशियल एक्सटेंशन है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट द ऑफिशियल एक्सटेंशन, अनऑफिशियल एक्सटेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो क्या कहोगे? स्वराज, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही तो स्वराज ऑफिशियली अप्रूव हुआ, तो ऑफिशियल गोल क्या हो जाएगा? स्वराज। ओके, तो नोट कर लो इसको, द ऑफिशियल गोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज स्वराज। स्वराज वाज द ऑफिशियल गोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज वाज द ऑफिशियल गोल। ठीक है, ऑफिशियल गोल स्वराज ही था। ठीक है, नाउ आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस इंटायर टॉपिक। आपको समझ में आया? कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट। एक बार चैट बॉक्स भी देखूं। हाँ, कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज सडन और ग्रेजुअल? ग्रेजुअल, ठीक है ना? सो राइट दिस पॉइंट, डिक्लाइन sudden or gradual, so the answer is gradual. Decline was sudden or decline was gradual, so the answer is gradual. ठीक है ना? Now I am asking one other question, that Swadeshi movement, okay, it was a failed movement or successful movement? It was a failed movement or successful movement? In your opinion, what we should consider? Yes, Akash. एग्जैक्टली exactly. देखो, इसको इस तरह के क्वेश्चन को लिखने में हमेशा ध्यान रखना है, वी विल नेवर से दैट इट इज अ फेल्ड मूवमेंट। हम क्या कहेंगे? दैट इट्स ट्रू दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल इन रियलाइजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल क्या था? स्वराज। स्वराज हमें मिला नहीं, ठीक है, ये बात सच है, but still it was a significant movement due to various reasons. Always you will use this approach. तो write this, what should be the approach? अप्रोच की बात है, जब यहाँ पे स्टैंड लेना हो तो आपका अप्रोच क्या होगा? राइट दिस, इट्स ट्रू दैट अप्रोच, इट्स ट्रू दैट स्वदेशी मूवमेंट was not successful in realizing its political objective. It's true that Swadeshi movement was not successful in realizing its political objective, but it's true that Swadeshi movement was not successful in realizing its political objective, but but it was significant due to a variety of reasons. But it was significant due to a variety of reasons. It was significant ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, और वो रीजंस क्या है? राइट, पॉइंट वन, ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस, इट वाज सिग्निफिकेंट ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस। राइट, पॉइंट वन, इट रेज्ड, हाँ, डिमांड फॉर स्वराज वाज फर्स्ट रेज्ड। पहली बार डिमांड फॉर स्वराज वाज फर्स्ट रेज्ड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। डिमांड फॉर स्वराज, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, स्वराज was defined as aim or demand for Swaraj for the first time during this movement, 1906 session, 1905 session. It was discussed, here it was defined,
एंड गिवन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। डिमांड फॉर स्वराज, पहली बार, एंड दिस इज अ चेंज, अ पैराडाइम शिफ्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मानते हो इसको? ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम कह सकते हैं कि इट रेज द लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द मासेस? यस, read this, it raised the level of political awareness of the masses। इसका सिग्निफिकेंस तो इसलिए भी है क्योंकि मास मोबिलाइजेशन को एज अ टेक्निक इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ओके, मास मूवमेंट, पहला ही है ना। सो रेड दिस, मास मोबिलाइजेशन एंड फर्स्ट मास मूवमेंट, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मास मोबिलाइजेशन एंड फर्स्ट मास मूवमेंट, mass mobilization and first mass movement. Can we say it paved the way for the future political struggle? Yes, 1905-08 में जो कुछ भी हुआ, it paved the way for the future political struggle, right? This, it paved the way for the future political struggle, it paved the way for the future political struggle. Some techniques were used for the first time, वो क्या था? स्वदेशी, boycott, okay, read this, okay. Some new techniques were used as a part of national movement strategies. Some new techniques were used for the first time as a part of national movement strategies. Some new techniques were used for the first time as a part of, okay, national movement strategies. Example, Swadeshi boycott, Swadeshi boycott. Okay, you can write one more point, that use of passive resistance, ब्रैकेट में लिख लेना, अनऑफिशियल यूज ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, इसका भी यूज हुआ और ये यूज क्या था? अनऑफिशियल था। यूज ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, इसका भी यूज क्या था? अनऑफिशियल। कैन वी से दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज हेल्पफुल इन सपोर्टिंग द इंडियन indigenous class of capitalists? Okay, so read this, Swadeshi movement also boosted the confidence of Indian capitalist class. Swadeshi movement also boosted the confidence of Indian capitalist class, and now they were more organized and consolidated. Swadeshi movement also boosted the confidence of Indian capitalist class, and now they were more organized and consolidated. Now they were more organized and consolidated. What could be the example? IMC 1907. So read this example, IMC Indian Merchants Chamber 1907. उनको भी तो मोबिलाइज किया, IMC 1907, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और क्या हो सकता है? सो इस तरह के यू कैन यूज मेनी पॉइंट्स। कितने हो गए? 5 पॉइंट्स हो गए, और मोर देन 5, 6 हो गए, ठीक है। बिकॉज हमें वर्ड लिमिट तो ध्यान रखना है ना, राइट? 150 वर्ड्स का लिमिट होता है, तो जब हम सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो कैन वी राइट सम लिमिटेशंस आल्सो? यस, सो राइट दिस, ओके। देयर वर सम लिमिटेशंस टू स्वदेशी मूवमेंट आल्सो, some limitations to Swadeshi movement also, some limitations to Swadeshi movement also. Some limitations to Swadeshi movement also, right? Point 1, limitations क्या है? Limitations क्या है? Deadlock between moderates and extremists on several issues, ये limitation है। Deadlock क्या दिखलाता है? Disunity को, right? Deadlock between moderates and extremists at several occasions. Deadlock between moderates and extremists at several occasions. Right, next point. Okay. Split, Surat split. Okay. Surat split. Okay. Moderates, extremists split. ये भी क्या है? Limitation. This is also limitation. Third limitation was what? Use of religious symbols and slogans. ये intentionally नहीं था, but फिर भी ये limitation है, right? Use of
religious symbols and slogans. Use of religious symbols and slogans. ये ऑफिशियल नहीं है बट स्टिल दिस इज सम लिमिटेशन. ये भी एक लिमिटेशन है. मेरी बात समझ गए? ठीक है. बताओ कि यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम ओके वाज मेंटेन्ड और कुछ लिमिटेशंस इसकी लिमिटेशंस. सो राइट इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट दिस मूवमेंट फेल्ड टू अट्रैक्ट कंप्लीट पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स और फुल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स. इसका मतलब मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया बट नॉट इन वेरी लार्ज नंबर्स. ठीक है ना. क्योंकि मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं अपने कैंपेन को पॉपुलर कर रही थी राइट. दिस मूवमेंट failed to attract complete participation of Muslim classes. Complete participation of Muslim classes. ठीक है. Muslim classes. और इसकी एक लिमिटेशन क्या हो गई? Full participation of masses was ensured or not? No. So read this. Limited participation of masses. ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई. Limited participation of masses. This is one limitation. Limited participation of masses. This is one limitation. और दूसरी लिमिटेशन क्या है? It was confined to urban areas mainly. ठीक है ना. तो this is also a limitation. It was confined mainly to the urban areas. This is also one limitation. It was confined mainly to the urban areas. ठीक है. Got it? जनरली मैं क्लास में क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ बट क्वेश्चन इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर का एक पूरा का पूरा सेशन ही हम अलग से करेंगे. ठीक है ना. तो आप थीम को पढ़ लो और जब हम क्वेश्चन के मॉडल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे थीम के साथ साथ सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे. गॉट इट. तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है. आप कनेक्ट भी कर पाओगे चीजों को है ना. तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड स्वदेशी मूवमेंट. नाउ विल डिस्कस सम कनेक्टेड थीम्स. ओके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया. नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस पार्ट. फर्स्ट फेज फैमिलियर हो. 1885 to 1905. Are you familiar? Indian National Congress, important developments in Indian National Congress. I hope you all are familiar. Now you are familiar with this phase also, 1905 to 1907-08. आप इससे भी familiar. You are familiar with some other important events here. That is 1906. That is formation of Muslim League. ठीक है. You are familiar with these INC sessions. ये important है आपके लिए समझना. 1905 सेशन, 1906 सेशन, 1907 सेशन. ये भी आप समझ रहे हो. Got it? 1907 is important for सूरत split. आपको पता है split between moderates and extremists. 1906 is important for two reasons. One is Muslim League formation and the second is Swaraj was defined from the official platform of Indian National Congress. Here Swaraj was first discussed. And from this point onwards, now the political goal of our Indian national movement was Swaraj. इसके बाद हमारा political goal क्या था? Swaraj. Why this year is known 1907-08? Because here we see what? Gradual decline of Swadeshi movement. Here we see what? Gradual decline of Swadeshi movement. I have also discussed with you another event here, and that is एक और इवेंट डिस्कस किया था. दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ओके दिस इज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ 1909. एंड हियर इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक में. बट हियर वी डिस्कस्ड वन प्रोविजन दैट इज SCS फॉर मुस्लिम्स. ये हमने डिस्कस किया. गॉट इट. ये बात समझ गए. In this phase, there was an important topic that is ICA 1892, Indian Council Act 1892. I will also discuss this in constitutional development topic. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. In this phase, we have also discussed that what are the important developments during this time. 1899 to 1905, that is Curzonian reforms. Now you know about this. कर्जनियन रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है ना. अदर इश्यूज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वी हैव
ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है वो है लॉर्ड मेयो, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉर्ड रिपन, दैट इज 1882 1884, यहां से भी क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। Now we are also familiar with what are the important administrative reforms that was introduced by Curzon. Got it? We are familiar with all these events. These are called chain of events, series of important events that we must know. Now, I will discuss some other chain of events, that is Swadeshi movement gradually declined during this period 1907 to 08, and after this, okay, British government did what? They used the policy of carrot and stick. Carrot and stick. This policy, stick was used against extremists. ठीक है? And it means that the extremist leaders are arrested. Extremist leaders are arrested. Leaders are arrested, and the supporters or followers of extremist leaders were, okay, beaten, you can say that repression was done or brutal suppression was done, brutal suppression was done. तो ये ग्रुप तो पहले से ही एक्सट्रीमिस्ट है, एंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन व्हाट? 3S, 3S, दे बिलीव इन 3S, और 3S में एक पॉइंट क्या है? सेल्फ सेक्रीफाइस। सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब सिर्फ कपड़ा महंगा खरीदना नहीं है, वो जान भी दे सकते हैं देश के लिए, ध्यान रखना आपको। ए स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? ओके, self reliance, self sacrifice and strong will. So self sacrifice and strong will, they are ready to sacrifice their life for the cause of nation. तो जो अपनी जान देने के लिए तैयार है वो दूसरों की जान ले भी सकता है। मेरी बात समझ गया ना? तो दूसरों की जान वो तभी तक नहीं ले रहा है जब तक उसके टीचर, उसके मेंटर उसको गाइड कर रहा है। Who is the mentor? Extremist leaders. Followers were youth. Youth were highly motivated. Now extremist leaders were controlling them. उनको 3 years तक ही रोका हुआ था, और अभी आपने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कहां भेज दिया? जेल में, ठीक है। टीचर तो चला गया, अब स्टूडेंट, फॉलोअर्स, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ 3S। बस ये कुछ नहीं करेंगे, 3S में दो चीजें जोड़ देंगे, और वो क्या है? एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में बॉम्ब, हो गया 3S। दे बिलीव इन 3S प्लस दे यूज इन द, दे बिलीव इन द कल्ट ऑफ पिस्टल एंड रिवॉल्वर एंड बॉम्ब, ये दोनों लेके चल रहा है। नाउ दे विल बिकम व्हाट? रिवॉल्यूशनरी। सो इन द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, व्हेन देयर टीचर्स और मेंटर्स वर अरेस्टेड, व्हाट विल हैपन? एक्सट्रीमिज्म। देखो, एक्सट्रीमिस्ट्स को अगर आप फोर्सफुल सप्रेशन करोगे तो इनका रिएक्शन किसमें हो जाएगा? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। ध्यान से समझो, अगर मैं मॉडरेट हूं, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना गया तो मेरे भी पेशेंस की एक हद होगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि मैं रिएक्ट करूंगा। आई विल पुट सम रेडिकल डिमांड्स, आई एम एक्सट्रीमिस्ट। बट अगर फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई और मेरे को ब्रूटली सप्रेस किया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा? रिवॉल्यूशनरी बनने के अलावा। तो ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है कि मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट बन रहा है, एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी बन रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इंडियंस रेस्पॉन्सिबल हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल है। गॉट इट? सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट व्हाट हैपेंस? तो देख, 1908-09 के बाद इन इंडिया वी सी, राइट, फर्स्ट फेज ऑफ revolutionary activities. We see first phase of revolutionary activities after 1908-09, ठीक है। और ये फर्स्ट फेज कब तक कंटिन्यू रहेगी? तो देखो, द गांधीयन मूवमेंट, द फर्स्ट गांधीयन मूवमेंट इज NCM,
अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, और इसका टाइम पीरियड क्या है 1920 to 21. So when Gandhi will appear on the political scene, इस स्ट्रेटजी, इस मूवमेंट में, गांधी की मूवमेंट में सबसे बड़ा जो एक वेपन है वो क्या है, नॉन वायलेंस. सो गांधी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट मूवमेंट एंड ही मेक एन अपील टू द रिवॉल्यूशनरीज कि मुझ पे भरोसा करो, राइट, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ मूवमेंट एंड वी विल गेट स्वराज विद इन 1 year. 1 साल में स्वराज मिल जाएगा. रिवॉल्यूशनरी भरोसा करेंगे और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को वो छोड़ देंगे. तो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज विल स्टॉप. तो देखो ये कब स्टॉप होगा, विल स्टॉप विद द बिगिनिंग ऑफ एनसीएम. जैसे ही एनसीएम शुरू होगा, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज विल स्टॉप. तो कॉन्सेप्ट लिंक हुआ कि फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कब से कब तक है, 1908-09 टू 1920. क्यों 20 में रुक जाता है, क्योंकि गांधी अपना पहला मूवमेंट करने जा रहे हैं जिसका कोर स्ट्रैटेजी ही है नॉन वायलेंस. तो रिवॉल्यूशनरीज विल हैव फेथ इन द आइडिया ऑफ गांधी और वो अपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देंगे. और यहाँ पे गांधी ने क्या कहा था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनसीएम. तो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था स्वराज विद इन 1 year. गांधी ने ये कहा था स्वराज विद इन 1 year, 1 साल के अंदर स्वराज, स्वराज विद इन 1 year. तो लोगों ने कहा कौन वाला स्वराज, मॉडरेट वाला स्वराज की एक्सट्रीमिस्ट वाला स्वराज. गांधी सेड दैट ओके, if possible, if British will give us Swaraj within British rule, we will accept it. And if they will not give us Swaraj within British rule, we will fight for Swaraj outside British rule. तो इन्होंने तो कॉम्बो पैक बना दिया, कहा ये नहीं मिला तो वो भी चलेगा, ठीक है, स्वराज विद इन ब्रिटिश रूल, इफ वी विल नॉट गेट वी विल फाइट फॉर स्वराज आउटसाइड ब्रिटिश रूल. तो इन्होंने क्या किया, वेरी स्मार्टली ही अकोमोडेटेड बोथ दीज टू मीनिंग्स. दैट्स व्हाई गांधी एक बजे हुए राजनेता थे. ही वाज अ वेरी स्किल्ड पॉलिटिशियन. ठीक है, हल्का फुल्का पॉलिटिशियन गांधी को मत समझना, ठीक है, बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन. इन्होंने क्या किया, ही कंबाइंड बोथ दीज टू मीनिंग्स ऑफ स्वराज, दोनों मीनिंग को मिला दिए. ठीक है, कि इफ वी विल नॉट गेट स्वराज विद इन ब्रिटिश रूल, वी विल फाइट फॉर स्वराज आउटसाइड ब्रिटिश रूल. तो आपने जब कहा कि वी विल फाइट फॉर स्वराज आउटसाइड ब्रिटिश रूल, तो रिवोल्यूशनरी के दिल को बहुत तसल्ली हुई, कहा गांधी अच्छा आदमी. एंड गांधी इज सेइंग स्वराज विद इन 1 year, 1 साल में ही स्वराज मिल जाएगा, तो वी विल सपोर्ट गांधी. गांधी को सपोर्ट कर दिया. बट यहाँ 1 साल की जगह कितना टाइम बीत गया, 2 year. गांधी ने क्या कहा था, स्वराज विद इन 1 year. तो 1 year तो 1921 में पूरा हो गया. 1922 आ गया, स्वराज मिला नहीं. और 1922 में व्हाट गांधी डिड, गांधी सडनली स्टॉप्ड और सस्पेंडेड एनसीएम. गांधी ने क्या किया, सस्पेंडेड एनसीएम. गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया. जैसे ही आपने मूवमेंट को रोक दिया, द पीपल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवमेंट कि आजादी मिल जाएगी. लोगों को ऐसा ही लग रहा था. नाउ दे सी दैट वी डिड नॉट गेट फ्रीडम, आजादी तो हमें मिली नहीं. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज विल अगेन रीस्टार्ट. मेरी बात समझ गया ना. तो 1921-22 onwards, 1922 में क्या है, withdrawal of NCM. Here we see what, withdrawal of NCM, withdrawal of NCM. और इसके बाद right, the second phase of revolutionary activities will start. Second phase of revolutionary activities will start. ठीक है, and this will continue till 1930. ये 1930 तक चलेगा. दिस इज सेकेंड फेज, सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1930 तक. गॉट इट. तो दिस वी विल डिस्कस लेटर. ठीक है ना. लेटर मीन्स पहले वी आर डिस्कसिंग व्हाट, आईएनसी, गांधी, contribution of INC, then we will come to revolutionary activities. ठीक है ना. तो this chain of event you have to keep in mind. If someone asks you revolutionary activities, we will say that after suspension of Swadeshi movement, revolutionary activities started. First phase from 1908 to 1920, Gandhi started NCM and then revolutionary activities were stopped. Second phase from 1922 to 1930. क्या इसके बाद भी कोई phase है? Yes, I will discuss. So there is a separate chapter, revolutionary activities. We'll discuss it later. Now I hope you have connected these two things. Now
This was the second phase of Indian national movement, 1905 to 1919-20. Now you are familiar with a lot of events here. अब आपको ये सारी चीजें पता हो गई. 1905 to 08 स्वदेशी मूवमेंट, 1907 सूरत स्प्लिट, 1909 Morlemento reforms. Now you know that 1907-08 to 1920 revolutionary activities, first phase. Now in the same period we see what? World War started, 1914 to 1918. What we see? First World War. Okay. And during this period of First World War, HRL movement started, Home Rule League movement started. There were two HRLs, HRL 1 and HRL 2, right? Home Rule League movement 1. One was launched by Tilak and the second by Annie Besant. ठीक है ना? So in next class we will discuss HRL movement, Home Rule League movement. And in the same phase we see what? Entry of Gandhi. Gandhi भी आ जाते हैं 1915 में. In the same phase we see what? Champaran, Ahmedabad, Kheda, 1917, 1918, 1918. In the same phase we see what? Rowlatt Satyagrah, 1919. In the same phase we see what? Khilafat movement, 1919-20. In the same phase we see beginning of non-cooperation movement. So we are going to discuss these topics in the next class. ठीक है ना? So we'll start with HRL. Then we are going to cover Gandhian movements. ठीक है ना? और जब एक सीरीज में हम इसको खत्म कर लेंगे, then we will discuss revolutionary activities, then we'll discuss socialist and communist ideology, their contribution, their impact in Indian national movement. Got it? Then we'll discuss international factors and their role in Indian national movement. Then we'll discuss growth of communalism in Indian national movement, communalism and partition in Indian national movement. So there are a lot of things to discuss. जितना क्लास में बताऊं उतना याद रखो. Got it? इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? Trust me. Practice PYQ and just keep revising whatever I am teaching in the classes. ठीक है ना? Because this is the crux and essence of the books. ठीक है? This is filtered content. So this is going to help you a lot. And while delivering lectures, I used to accommodate prelims question also. आपको अभी पता नहीं चल रहा है. When you will practice PYQ, you will find that you already know the answer. मैंने वहाँ पे जानबूझ के फोकस ज़्यादा किया है. आपको लग नहीं रहा है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट येस वी आर प्रैक्टिसिंग PYQs ऑल्सो. जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस सेगमेंट से, जिस कोर एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ. ठीक है? तो जब आप साथ साथ PYQ प्रैक्टिस करोगे तो इस बात को बेहतर ढंग से समझोगे. ठीक है ना? तो कीप प्रैक्टिसिंग PYQs. ओके? हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो? और कल की वीडियो मैंने बनाई थी, देखने को तो वो वीडियो टाटा पे है, बट उसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का. उस वीडियो को देखना और नोट्स भी बना लेना उसका. ठीक है ना? तो एक मॉडर्न इंडिया का एक पतली सी कॉपी अलग रखो, जिसमें कोई अगर मैं स्पेशल सेशन लेता हूँ, ठीक है, तो उस वीडियोस को देख के और उसके प्रॉपर नोट्स बनाया करो. ठीक है ना? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे वीडियोस में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो आई एम सेलेक्टिंग कोर एरियाज इन स्पेशल वीडियोस. ठीक है? सो देयर माइट बी द चांसेस दैट यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेशल वीडियोस इटसेल्फ. वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हाँ, बताइए क्या डाउट्स हैं. हम्म हम्म देखो, ऐसा नहीं कि स्वराज पहली बार ये वर्ड लोगों के ध्यान में आया 1905, ऐसा नहीं. मैंने पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का भी मतलब है स्वराज. गॉट इट? ओके, सो दिस स्वराज वर्ड वाज वाइडली डिस्कस्ड बाय मेनी पीपल. ठीक है? बट ऑफिशियली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईएनसीज वाज डिस्कस्ड इन 1905. पहले से ये चर्चा में था. मेरी बात समझ गया ना? बट ऑफिशियली डिस्कस हुआ, डिफाइन हुआ 1905 और 1906 में. स्वराज का सिंपल मतलब क्या है? सेल्फ रूल.
जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इफ इन इंडिया देर इज अ ब्रिटिश रूल, देर इज अ फॉरेन रूल, देर इज एलियन रूल, आवर इकोनॉमी इज सब्जुगेटेड, आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज सब्जुगेटेड, तो आप किस चीज के बारे में सोचोगे? सेल्फ रूल के बारे में सोचोगे। जब आप सेल्फ रूल के बारे में सोचोगे तो आप स्वराज के बारे में ही तो सोच रहे हो। गॉट इट? ओके, इज द डाउट क्लियर? ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।